of you are fine after your first class. You have got the break, and definitely your energy ought to be totally intact by for तीसरे पीरियड में जाके बंदा थोड़ा सा ड्रिल होता है. दो पीरियड तो बड़ी आसानी से पढ़ लेता है. हसन, थैंक यू वेरी मच. वालेकुम अस्सलाम. अवैस, थैंक यू डियर. Amit, thank you. Well, Mobile beta, thank you. Sabah Khan, indebted to you. Thank you, beta. Walaikum assalam to everybody. Shajia, thank you, beta. Well, आप लोग खैरियत से हैं ना? ठीक है ना? CSS अब समझ में आना शुरू हुआ है. जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा है कि CSS में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज ये होती है कि CSS means to know something about everything. ठीक है? So you're supposed to be versatile. You ought to be very much prolific. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अब आपने रवायती अंदाज से नहीं पढ़ना CSS में आके. वालेकुम अस्सलाम उसामा, थैंक यू बेटा. सोबिया, थैंक यू. वेल, तो अब आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है. आपने थोड़ा एम्पिरिकल करना है अपने माइंडसेट को, अप्लाइड माइंडसेट, जिसे हम प्रैग्मैटिक माइंडसेट भी कहते हैं. ठीक है? ज्यादा पढ़ के उसमें से क्रक्स एक्सट्रैक्ट आउट करने का आर्ट सीखना है. प्रेसी इसीलिए सिखाई जाती है आपको, so to apply this skill onto all the other papers, because you have to come across so many lengthy sort of the documents, subjects, news articles and what not. तो आपको उसमें से पढ़ना होता है और एक्सट्रैक्शन करनी होती है. एक बेहतरीन तरीका ये होता है स्टडी का, किसी भी सब्जेक्ट की आप जब स्टडी करते हैं, अपनी डायरी, अपनी नोटबुक पास रखा करें और उसमें पॉइंट्स की शक्ल में नोट टेकिंग किया करें. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेफरेंस है, उसको नोट करें. ठीक है? और उनको बाद में खुद रिप्रोड्यूस करा करें. जब आप खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, टाइम कीपिंग आपको आ जाती है, आपकी स्पीड एनहांस होती है, आपका फ्लो ऑफ आइडियाज जो होता है इसमें कंटिन्यूटी आती है. और एक मैकेनिकल equilibrium होता है ना, poise जिसे हम कहते हैं, you attain that because most of the times what happens, you might have noticed, some of you might have been making so many cuttings in the paper. कई लोग आप में से ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी कटिंग होती है, फूल बूटे बनाते हैं पेपरों में. वो क्यों होती है वाला? वो इसलिए होती है कि एक मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन लैक कर रही होती है. कभी कभी हम सोचते बहुत ज्यादा है, पॉइंट्स बहुत तेजी से आ रहे होते हैं और हमारी लिखने की स्पीड स्लो होती है. और कभी कभी हमारी लिखने की स्पीड बड़ी तेज होती है और पॉइंट्स का प्रोग्रेशन स्लो होता है. इन दोनों चीजों की वजह से आपकी कटिंग भी होती है, एलिजिबिलिटी भी होती है. इसलिए डेफिनेटली आपको लिखना है. जब आप लिखते हैं, अपने पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप इस मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन को भी अटेन कर लेते हैं. गॉट द आइडिया? सर, व्हिच पेपर एंड व्हिच आर्टिकल्स आर बेस्ट टू टेक इनफ इंफॉर्मेशन? चलिए, दैट इज डन. एंड दूसरे नंबर पे नेशन. ठीक है? उसके अलावा मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूं. एक बुक है और भी, एक तो हमारा मैगजीन होगा, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बेस्ट मैगजीन सो फॉर. और एक आपकी किताब है, उसको नाम है कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स. कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज शाहिद, published by advanced publishers. ठीक है? ये हॉट सेलर बुक है, ये एक हॉट सेलर बुक है जिसको आप, यानी इसकी कभी कभी कॉपी बुक करवानी पड़ती है. डेफिनेटली फरखांदा, यू विल गेट द नेक्स्ट एडिशन. अभी मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा आपको मिलना. ठीक है? तो ये जो बुक है, ये यहाँ से अवेलेबल नहीं है, किसी भी बड़े लीडिंग स्टॉल से ले सकते हैं. इस वक्त इसका 100 एंड शायद मोर देन 10th एडिशन चल रहा है. ये कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स जो है, ये कंपाइलेशन ऑफ योर आर्टिकल्स है फ्रॉम इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स, एंड दे हैव बीन एडिटेड फॉर योर कन्वीनियंस. और बहुत खूबसूरत बुक है ये भी, कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स, आपके करंट अफेयर्स के लिए. गॉट द आइडिया? जी, मैंने ये बताया है आपको कटिंग के हवाले से मोहम्मद अवैस के, जब आप लिखते रहेंगे ना,
तो ये सोचने की और लिखने की कोऑर्डिनेशन में जो फर्क आता है वो खत्म हो जाएगा। शजिया ये पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इसका एडिशन हर 1.5 महीने के बाद आता है, महीने 1.5 महीने में। ये पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, इसे मैं भी पढ़ता हूं, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। गॉट द आइडिया? आगे चलते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है राइट एट द आउटसेट तो आप कर सकते हैं, वरना मैं अपने काम की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले, एनीबॉडी इफ यू इंटेंड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? शजिया एंड बाकी लोग भी, don't go for the shortcuts please. It is my earnest request to all of you. एक्सटेंसिव रीडिंग किया करें, एक्सटेंसिव स्टडी किया करें, वाइडन होता है मेंटल होराइजन। ठीक है? क्योंकि राइट नो आपने तलाक दे देनी है अपने हर और काम को, एंड आपका ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ सीएसएस होना चाहिए। ओके, बिकॉज बर्न योर बुक्स एंड यू नीड टू जस्ट गो थ्रू। रिकग्नाइटिंग करें सब्जेक्ट्स की, और करने के बाद उसमें से मटेरियल लिया करें, पॉइंट फॉर्मेशन में रिप्रोड्यूस उसे खुद किया करें। ठीक है? इसी तरह जब ऐसे स्टार्ट होगा, एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये होती है कि स्टूडेंट मटेरियल अकोमोडेट करने पे लगा रहता है या टेक्निक्स लर्न करने पे लगा जाता है। ठीक है? वो लिखने की तरफ नहीं आता। इंक पेन इज अलाउड माय डियर, इंक पेन इज अलाउड, बॉल पॉइंट इज आल्सो अलाउड। ठीक है? Well, if you feel comfortable Avas while making use of ink pen, that is also good. लेकिन मेरे ख्याल में बॉल पॉइंट से ज्यादा स्पीड और ज्यादा फ्लो डेवलप होता है। वो भी एक ना यूनी बॉल वगैरह के वो आते हैं, फाउंटेन इंक वाले बॉल पॉइंट। पर्टिकुलरली एक मुझे याद है, उसकी 0.7 टिप है, 0.7 टिप वाला जो है ना, वो बहुत अच्छा चलता है, बड़ा फ्लो देता है। बेस्ट सोर्सेज टू डू vocabulary vocabulary from I told you फरखंदा, एक मैंने आपको बताई थी majortests.com, एक है GRE टेस्ट वोकैब, और एक है आपका GAT टेस्ट वोकैब। ये 3 बेहतरीन सोर्सेज हैं। एंड बिसाइड्स दैट चौथी जो है वो आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में से इंटेंशनली आपको ये काम करना होता है। Always keep your pen with you and your notebook. Daily when you come across some kind of article, just extract out not more than 4 to 5 words maximum. उनको ले लें, उनको याद करें, and then use them in some kind of context. Whether it is going to be your current affairs, spark affairs, international affairs, essay writing or whatever that is. सिर्फ 4 लफ्जों की आप डेली प्रैक्टिस करें और उनको आप कंसोलिडेट करें। ठीक है जी? You can use pointers, blue pointers, Ikra, you can use. Farkhanda, how about SAT vocab by Barron's? Yes, that is good too. SAT की ही vocabulary इन तीनों में भी है, मौजूद है। मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया फरखंदा, ये मौजूद है। I think rollerballs are best. They're fast. Yes, they are also very fine. आमना, उसके अलावा एक ना ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बड़े थोड़े लंबे साइज में होते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। मैं नाम भूल गया उनका। ठीक? ऐसी कोई भी चीज जो आपके हाथों पे स्ट्रेन ना करें वो आप ले सकते हैं। बेसिकली एमशा, आप बुलेट पॉइंट्स को जहां जरूरत है वो चेक करवाएं, जहां पूरा एक्सप्रेशन चाहिए वहां वो चेक करवाएं। गॉट द आइडिया? आ रहा हूं जी अब मैं अपने काम की तरफ। शाजिया एंड हफ्सा, आपने हमें लिंक ज्वाइन किया। ये सोर्सेस हैं हमारी वोकैबुलरी की, नोट कर लीजिए प्लीज। Sir, other past papers, all books like Doger are good for the vocab and essays, Precis, etc. ये कौन पूछ रहा है? फरूख ज़ेब साहब, ये देखिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं आपके सामने। अल्लाह का वास्ता डोगर की किताब नहीं लेनी। डोगर की बुक्स में 52 to 3% आंसर्स गलत हैं आपके। डोगर साहब किसी से किताब नहीं लिखवाते, खुद ही कट एंड पेस्ट करते हैं और बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए वो नहीं लेनी है। कोई भी और बुक आप ले सकते हैं इस मकसद के लिए। जहांगीर वालों की, हमारी ले सकते हैं, कारवान की ले सकते हैं, एडवांस पब्लिशर्स की ले सकते हैं। ठीक है जी? ऐसे की मैंने बता दिया आपको कि बुनियादी तौर पे ऐसे की मिस्टेक्स यही होती है कि स्टूडेंट या तो मटेरियल अकोमोडेट करता रहता है या फिर वो
टेक्निक्स लर्न करता रहता है, लिखने की तरफ नहीं आता। मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि आपका एक्चुअल टाइम ऑफ राइटिंग जो है ऐसे, दैट इज 2 hours and 35 minutes, क्योंकि 5 मिनट आपके प्रायोरिटी मेकिंग में निकल जाते हैं। यू थिंक अ लॉट कि आपने किस टॉपिक को ऑप्ट करना है, ठीक है। उसका भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि 9 एसेस में से 8-9 जो दिए गए उनमें से 2 को टिक करें, फिर उनमें से एक को किसी टेक्निकल रीजन की वजह से रूल आउट कर दे कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो इवेंचुअली व्हेन यू गो टू द लास्ट ऐसे, इस पूरे प्रोसेस को 5 मिनट लगते हैं। 20 minutes are meant for your outline. First of all, you draw a rough outline, a tentative outline. You may call it an informal sort of the outline. And after that, आप इसको फिल्टर करते हैं ये एक फॉर्मल आउटलाइन की शक्ल में। ये 20 मिनट का कम से कम टाइम दे रहा हूं प्रोसेस है इस जाता है। तो आपका एक्चुअल टाइम 2 घंटे 35 मिनट है जिसमें आपने ऐसे लिखना है। एंड योर थ्रेशोल्ड लेवल इज 2500 वर्ड्स एट लीस्ट। गॉट द आइडिया? एंड यू मस्ट क्रॉस द बैरियर ऑफ 2000 वर्ड्स बाय ऑल मींस। मत किसी की बात में आइएगा, लोग डिसवेड करते हैं कि जी नहीं अच्छा लिखा होना चाहिए, 1200 नंबर का ऐसे भी ठीक है, 1300 को भी ठीक है। वो पागल है जिन्होंने 2500 वर्ड्स का थ्रेशोल्ड लेवल दिया। एक्सेप्शंस आर देयर। कई ऐसे लोग हैं जो कि आए हैं यानी 1600-1700 वर्ड्स में ऐसे लिख के पास हुए हैं, बट दे आर एक्सेप्शनल, वेरी फ्यू। गॉट द आइडिया? इसको आपने ज़हन में रखना है। पासिंग स्कोर इज 50, नो 40 फरखंदा इन ऐसे। इन ऐसे इट इज 40। नमान ने बता दिया 40 है आपका पासिंग स्कोर। गॉट द आइडिया? अब देखिए इतने बड़े बड़े बिग गन्स पिछले 4 साल से हमारी लीडिंग पोजीशंस आ रही हैं, ठीक है। पहले हमारे उस्मान गुम्मन आए, पाकिस्तान टॉप किया। फिर हमारे अवैध इरशाद भट्टी, वो मेरे ही स्टूडेंट थे इत्तेफाक से, उन्होंने पाकिस्तान टॉप किया। एंड राइट आफ्टर दैट आप देख लें ये अभी भी आए, क्या नाम था अभी जो है बच्चा, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। ये सब टॉपर्स हैं। अब ये जो इतने बच्चे हैं, आप हैरान होंगे ऐसे के पेपर में इनके 40 मार्क्स हैं, ठीक है। अवैध के भी 40 हैं, उस्मान गुम्मन के भी 40 थे। तो कैसी अजीब बात है कि had they been having 39 they would not have been in the list of passing candidates. तो एक नंबर उन्हें कहां से कहां जंप करके गया। इतनी आउटस्टैंडिंग इंग्लिश लिखने वाले। प्रॉब्लम यही था कि मटेरियल जमा करना, ये वो। जी उस्मान हैदर, राना उस्मान हैदर। आतिफ अमीर भी मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, मेरे दोस्त हैं बड़े पक्के, उनका बेटा भी है। तो आतिफ बहुत अच्छा था, लेकिन आतिफ की स्टडी 1.5 साल की स्टडी थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा था। हालांकि हम्माद, जिस पेपर में जिस सेशन में अवैध इरशाद भट्टी ने टॉप किया, पाकिस्तान टॉप, उसी का क्लास फेलो स्टूडेंट हम्माद भी था। हम्माद गॉट 68 मार्क्स इन ऐसे। गॉट द आइडिया? सो हर किस्म की एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट मटेरियल अकोमोडेट करता रहता है कि जी मुझे टॉपर्स के ऐसे मिल जाएं, मुझे अवैध के ऐसे मिल जाएं, आतिफ अमीर के ऐसे मिल जाएं, ठीक है। लिखता नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना होता है ना। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है वो जी हसान हमारा बड़ा प्लेजेंट, बड़ा मुस्कुराने वाला, हमेशा खुशो खुरम रहने वाला नौजवान था हसान। तो होता क्या है, स्टूडेंट्स आर स्लैक टू अंडरस्टैंड अ वेरी की इंपॉर्टेंट की पॉइंट, दैट इज कि 3 साल पहले के जो ऐसे लिखे हुए आप कंसल्ट करेंगे वो आपके काम नहीं आएंगे। Because by then, statistics have undergone a kind of change. Facts and figures, data have undergone a kind of change. 3 साल पहले जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन थी अब नहीं है। 3 साल पहले जो टेररिज्म की कंडीशन थी वो अब नहीं है। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की चेंज हुई है, फॉरेन पॉलिसी में चेंज आई है, रेमिटेंसेस में चेंज आई है, ठीक है। फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का फिगर एनहांस हुआ है, so many other such kind of things. तो इसलिए स्टूडेंट उनको रट्टा लगा के वैसे ही ऐसे लिख देता है, क्योंकि नकल के लिए भी वो कहते हैं ना अकल की जरूरत होती, वरना तो वो सरदार जी वाला काम हो जाएगा। वो मैट्रिक के बच्चा पेपर दे के निकला इंग्लिश का, तो बाहर एक और दोस्त खड़ा कहने लगा कर लिया तुमने पेपर? कहने लगा हाँ। कहने लगा इतनी जल्दी? मैं तो पूरा टाइम लगा के आया हूँ। कहने लगा ऐसा कैसा हुआ तुम्हारा, ऐसे कैसा हुआ? कहने लगा यार ऐसे मैंने छोड़ दिया। जो पहले निकला था उसको कहने लगा कि मैंने छोड़ दिया। कहने लगा क्यों? कहता मैं बेस्ट फ्रेंड करके गया था, वहां माय फादर पे ऐसे आ गया। कहता ला ये कौन सा बड़ा काम था। उसी मटेरियल को
एम्पलीफाई करके उधर ट्रांसफॉर्म कर देना था। कहता मैं तो लिख के आया हूँ वही, ऐसे मैंने उधर फिट कर दिया, बल्कि मेरा बड़ा एनिग्मेटिक स्टार्ट था। मैंने लिखा यूं तो मेरे बहुत से बाप हैं, लेकिन मेरा हमसाया मेरा सबसे अच्छा बाप है। ठीक है, तो जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को कॉपी करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, तो फिर ये होता है वो ऑब्सोलीट होता है, आउटडेटेड होता है। एवरी ईयर आपके स्टैटिस्टिक्स चेंज होते हैं। गॉट द आइडिया? सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। आते हैं जी, आपको एक टास्क दिया गया था, अगर क्वेश्चन कोई नहीं तो उस पे आ रहे हैं अब। देखिए आपको एक टेक्स्ट दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज्ड टू गिव मी द जिस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट. इट वाज एग्जांपल नंबर 2 and the first line was, when I was in the country last summer I was often in company with couple of charming women. ये वाला आपका टेक्स्ट पैसेज था। अब आपने सबसे पहले इसका मुझे जिस्ट देना है। पेस्ट कीजिए, इसका जिस्ट क्या है, what the whole of the text is all about. Hurry up please. What the whole of the text is all about. How good looks and charm can help some women get away with just about anything. Okay. So you are going to put that in the court of the women, Mustafa Imran. You are giving as if women were responsible for the things. Aga Farhan Ali, company of charming women. Okay, the spectator, mobile spectator for example, mubham just होगा, इससे हम कोई आइडिया नहीं ले सकते, ये अच्छा नहीं होगा। नायाब, women wit. Okay, women's wit. Pranks on a man by two witty ladies. Fascinating account from when I was the country. Well, charming women. नीचे करो यार, prank, wit and beauty, humor and alluring of women. रोकना जरा यहाँ पे। Prank on a man by two witty ladies. Fascinating account. ठीक है। Charm of women. Loss of conscious in front of beauty. Prank, wit and beauty, humor and alluring of women. A man fooled by two young ladies, an erotic person was given job with charming girls and tricked. Don't be fooled by beauty. Adventure of summer with charming women, company of attractive ladies, delusion of charms, man's infatuation with women, charm strikes the sight. Okay. सदफ ने एक वर्ड लिखा है, prank. It is basically all about a prank. It's a prank. ठीक है, बाकी लोगों ने जो दिया है वो भी गलत नहीं है, मैं एग्जैक्ट जिस्ट आपको बता रहा हूं। ये लॉस ऑफ कॉन्शियस, विट एंड ब्यूटी, ह्यूमर एंड alluring ऑफ वुमेन, ये सब ठीक है। अ मैन बी फूल्ड बाय टू यंग लेडीज, ये भी ठीक है। कंपनी ऑफ अट्रैक्टिव लेडीज, ये भी ठीक है। डिल्यूजन ऑफ चार्म जैसे नूरुल हुदा ने दिया, ये भी बहुत अच्छा है। मैन्स इन्फैचुएशन विद वुमेन, वेल चार्म स्ट्राइक्स द साइट, ये भी अच्छा है रजा खान का। प्रैक्टिकल जोक ऑन गलेबल विजिटर, ठीक है। वुमेन ट्रिक अपॉन जेंटलमैन, women trick upon gentlemen, right? Narration of a flirt, okay, ye bhi acha hai. So basically whole of the text is all about a prank, ladies prank. Yes Sabah, ye ek prank ke bare mein hai jo which is being played with a gentleman in the same premises. Why? Because the gentleman tries to take liberties with both the women and he tries to flirt with them. He's no doubt is infatuated by both of them. होता है कभी कभी, वो कहते हैं ना मर्द कभी नहीं बदलता, वो शादी से पहले भी शादी का ख्वाहिशमंद होता है, शादी के बाद भी शादी का ख्वाहिशमंद होता है। तो ये वही चीज है कि एक नहीं दो तीन चार पांच भी अच्छी लग जाती है मर्दों को, तो वो कोई इसी किस्म का मर्द होगा जिसको एक ही वक्त में दो लेडीज अच्छी लगी हैं, तो दोनों पे कम वक्त एक ही वक्त में लाइन मारना चाहता है, और यही फॉल्ट होता है, बहुत बड़ी गलती होती है। ओके, ऐसा कभी नहीं करना। इस ग्रुप में बैठे हुए तमाम नौजवानों को मेरी नसीहत है कि नेवर गो फॉर कपल ऑफ लेडीज। गॉट द आइडिया? एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस इज कि कभी अपने लोकेलिटी में, अपने इलाके में, अपनी गली में, अपनी लेन में, अपने ब्लॉक में इश्क ना करें, वो मटीरियलाइज नहीं होते। बड़ा दुख होता है जब उसी लड़की की शादी पे तंबू और कुर्सियां लगानी पड़ती हैं, फिर 6 साल के बाद उसके बच्चे मामू मामू कह के बुलाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है? Yes, he wants to increase probability, yes, son. Well, very right. Okay जी, अब मुझे आप ये बताइए कि इस टेक्स्ट में कोई ऐसे वर्ड्स
जो आप कॉन्टेक्स्ट से जिनका मीनिंग एस्यूम नहीं कर सके, वो कौन से वर्ड्स? गिव मी दोज वर्ड्स. The first one is coquetry. Okay, coquetry. The second one is asunder. Okay, after asunder we are going to have, okay, torments. G, swaddle. ये वर्ड जो स्वेड्स लिखा है शजिया ने, ये गलत स्पेल किया हुआ है, उसमें कंपोजर की गलती है. दिस वर्ड इज स्वेट, SWATHE, स्वेट. शजिया ये एग्जैक्ट वर्ड है, देख लीजिएगा. सो ऑन द होल ये आपके 5 के करीब ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं आया. दिखते, लेट अस सी. मैं आपको हर चीज डिटेल में अंडरस्टैंड करवाऊंगा जी. कहां है ये वर्ड coquetry? Yes, got that. Who had all the wit and beauty one could desire in female companion, with a dash of coquetry that from time to time gave me a great many agreeable torments. With a dash of coquetry that from time to time gave me great many agreeable torments. So coquetry, I think to some extent its meaning is assumable, understandable. We can infer that from the context. Yet it is a difficult word. Why? Because right after that there is a comma. और जब detach हो जाए word तो थोड़ा और difficult हो जाता. Can anybody give me the meaning of this word? नाज, अदा, नखरा. नमान इकबाल, उर्दू में एग्जैक्टली आपने इसे एक्सप्लेन किया है. ये वर्ड दो अंदाज में डिस्कस होता है. एक तो ये फ्लर्टेशन के अंदाज में डिस्कस होता है, फ्लर्टेशियस बिहेवियर, और दूसरा यही नाजो अदा और नखरा. ठीक है, यहां पे इसका मतलब नाजो अदा और नखरा है. गॉट द आइडिया? नखरा है, नाजो अदा है. ये औरतों को अल्लाह ताला ने वदियत किया होता है, और जो लोग इसको ऑब्जेक्ट करते हैं वो सैडिस्ट होते हैं. ठीक है, वो बड़े ही बोर किस्म के लोग होते हैं. तो ये नाजो अदा होती है लोगों में. मासूमियत भी इसमें मैटर करती है. जैसे वही नूरजहां से उसने पूछा था शहजादे ने कबूतर कैसे उड़ गया, उसने दूसरा भी उड़ा दिया. उसने कहा ऐसे उड़ गया. ये 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में वो विलियम थैक्रे का एक नॉवल था वैनिटी फेयर. वो एपिसोडिक सोप सीरियल्स में चलता रहा, सोप सीरियल में. तो उसमें उस दौर में वो लड़कियां होती थी तो वो टॉफ्टा फ्रॉक्स पहनती थी, हैट पहनती थी, नेट के ग्लव्स पहनती थी, और उनकी सारी जो एफर्ट होती थी अपनी कमर पतली करने की तरफ होती थी. वो हैम्पटन कोर्ट में बिग्गियों में बैठ के आती थी, शेरेट्स में, और जब उतरने लगती थी दे लुक फॉर सम जेंटलमैन, और कोई भी आदमी आगे बढ़ के घुटना टेक के तो फिर उनको बग्गी में से उतारता होता, तो वो ऐसे करके अपना हाथ आगे करती होती थी. मैं माफी चाहता हूँ, मेरा इतना खम नहीं आ सकता. तो ये भी एक नाजोदार नखरा था. तो नखरा औरत के लिए इनसेपरेबल है, और ये अल्लाह ताला की वदियत की हुई एक चीज है. यहां मुराद नखरा ही है. गॉट द आइडिया? जिसकी वजह से उसको अग्रीएबल टॉर्मेंट्स मिलते रहे. टॉर्मेंट्स भी और अग्रीएबल. वेल, इट मींस प्लेजेंटरी, प्लेजेंट बिहेवियर. ठीक है, नॉट मिस्चीवियस इन द सेम वे. नो 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 नो. chivalry by men, what does it mean? No, no, no. It is not. Coquetry can never be associated with the man Mustafa Imran. कभी नहीं, मर्दों के साथ नहीं एसोसिएट होता. मर्दों में खुदा न खास्ता अगर नखरा और इस किस्म की अदाएं होंगी तो वो तो मर्द ही नहीं रहेंगे, उनको फिर अब्दुल रजिया कहा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. Asunder. Where is this word? Asunder. Let me find it. Yes, I found that. Again. Well, got that. I was after my way in love with both of them and had such frequent opportunities of pleading my passion to them when they were asunder. I think ये तो crystal clear है. When they were apart, when they were separated. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, यही मतलब है इसका. asunder means apart. जाहिर है, जैसे मैंने बताया, एक वक्त में दो लाइनों पे दो लड़कियों पे लाइन नहीं मारी जा सकती. ओके. थर्ड वर्ड इज torment. It is
Yes, I've come across that word again. With a dash of coquetry that from time to time gave me a great many agreeable torments. So agreeable torments, torments का मतलब होता है वैसे तो persecutive acts, atrocitic treatment. लेकिन मोहब्बत में जो torments होते हैं, they are supposed to be bearable and agreeable. वो पंजाबी में कहते हैं ना, भावें हिजर ते भावें विसाल होवे, वक्को वक्त दुहां दियां लज्जतां ने. ये दोनों का अपना अपना चार्म होता है. मोहब्बत में इंतजार जैसे होता है, ये भी इसका ये टॉर्मेंटिंग होता है फॉर अ लवर, लेकिन इसका भी अपना एक मजा होता है, ये एग्रीएबल होता है. ठीक है जी. जैसे मीठा दर्द, आपने कहा चीनी पाती है जी हसान साहब, तुसी दर्द ठीक हो गया जी. तो एफ्लिक्शंस, बट एग्रीएबल एफ्लिक्शंस. एग्जैक्टली, ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड इज स्वेडल. They immediately began to swaddle me up in my nightgown. यार ये तो बहुत आसान वर्ड है, ये मतलब contextually foreign समझ आता है. They immediately began to swaddle me up in my nightgown with long pieces of linen. So what does this word mean here contextually? Began to swaddle me up. Wrap. Exactly, all right. It is wrap. Mind you, the word is wrap, to cover up. Exactly, all right. इसी तरह last word is sweat. जी. Which they folded about me till they had wrapped me in above 100 yards of sweat. This word is not sweat, it is sweat. 100 yards of sweat. तो ये भी clear है, 100 yards of sweat. Well, stripe of cloth. Exactly, all right. नवान इकबाल, sash जिसे हम कहते हैं, stripe of cloth. बिल्कुल ठीक हो गया. तो इनमें से इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड था, गैसेबल नहीं था. ये और ये चारों वर्ड कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टैंड किए जा सकते थे. तो आहिस्ता आहिस्ता यू नीड टू पुट योरसेल्फ टू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, because you have intentionally to infer the meaning of most of the difficult words from the context. It gets very boring time and again to consult dictionary for the lexical transcription of those words. So better first of all to concentrate upon the context, the way the word has been used. Clear? इस तरीके से हमें पता चल जाता है. अब आ रहा हूं जी इन क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ. पहले आपको ये एक्सरसाइज दी थी, हालांकि मेरा ये पूरा काम नहीं हुआ अभी. मैंने अभी आपको बताना है कि एग्जामिनेशन में हम कैसे करते हैं. ये देखना चाहता था कि आपके ज़हन में कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्या चीज है. फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, Why were torments given by the young ladies? पेस्ट करें अपना आंसर ग्रुप चैट में पेस्ट करें. Why were torments given by the young ladies? Because they knew the writer fancied them and would not object. Half answer Mustafa Imran, it needs elaboration. Next, और पेस्ट कीजिए, कौन करेगा? ये मुकम्मल ठीक आंसर नहीं है मुस्तफा, आधा ठीक है. Well, please keep on pasting your answers in group chat, and they could have their way with him. Even then, it is not very fine. G. The torments were given by the young ladies because they were witty, charming, and had the ability to tell plausible stories, and they wanted to humor themselves. जी मोहम्मद अमीर, आपका पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है. इतना ही आंसर हो जाए तो तब भी बड़ा है. They were witty, charming, and had all the tools to torment the writer. ठीक हो गया, अच्छा आंसर है. Sadistically teasing, okay, वो हो गया tormenting का. As a habit, and that the writer fancied them and used to encourage them. No, Aghafran, this is not also fine. The young ladies were witty and enjoyed playing pranks on the man. Half of the answer is correct, Talha. The wit and beauty of women's giving him agreeable torments. ठीक है, आ जाएगा. Because the girls were habitual of flirting. No, not at all. Ahmad Shah, it is not the girls who were flirting, basically. It is the man who used to flirt with the girls. And they eventually thought of teaching him a lesson. Okay? The ladies were beautiful and clever. The torments were afflicted by the ladies because of their flirtatious behavior. Okay, Naya was a comparatively better answer. Hassan, because writer was agreed. Hassan deal gaye was agreed with them
and he wanted to spend good and enjoyable time in company of these pretty women, and he wanted to make his summer memorable. Okay, comparatively better answer. Shajia, because they know it was bearable for him, their charm will increase by that. Partly correct, Shajia, not totally, because the writer was in love with the both. No doubt, this is also one of the reason, but it is insufficient. Noman Iqbal. Add Karen. The young ladies were full of glam and beauty. They have amazing personality with catchy havers. That's why they give comment to male companion. मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आंसर है. ग्रामेटिकली इसमें फॉल्ट्स हैं अफसा, लेकिन आंसर का कंटेंट ठीक है. ठीक है. The writer appreciated the wit and countless of both ladies. Wit and countless? What? Countless what, Sabah? Of both ladies and wanted to enjoy their company. Their company, right? ठीक है. Their intelligence and beauty with a touch of flirtatious behavior gave great agreeable torments to the writer. ये भी ठीक है ना? ये आंसर आपका बेहतर है. बिल्कुल ठीक है. अब मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, मैं भी लिख देता हूं. अब देखिए फॉर्मूला आंसर कैसे दिया जाता है. फॉर्मूला जी दाऊद का मैं आंसर पढ़ लूं. An erotic nature of man was understood by both young girls. They used in his this nature, and for to trick him they use their physical beauty. इनडायरेक्ट आंसर है दाऊद, इनडायरेक्ट आंसर है. देखिए अब मैं आंसर देने लगा हूं. फॉर्मूला आंसर कैसे दिया जाता है. You need to slice out a part of your question statement and add it into your answer statement. आपने अपनी question statement का आधा हिस्सा अपनी answer statement का start बना लेना है. ठीक है. Well, जी ये भी ठीक है मोहम्मद अहमद, because they knew they had all the qualities men could desire of. ठीक है. Well, for example, question number 1 का आंसर क्या होगा. The torments were given by the young ladies because they were witty, beautiful, and had coyness, which made the writer uneasy. ठीक है. Well, the torments were given by the young ladies because they were witty, beautiful, and had coyness, which made the writer uneasy. Clear? This is what is a comprehensive answer. हमने अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही अपनी आंसर स्टेटमेंट बना लिया. कभी हमने सिंपली बिकॉज से आंसर नहीं देना जैसे मोहम्मद अहमद ने दिया है, बिकॉज दे न्यू दे हैड. इनफॉर्मली आपके आंसर चलेंगे इस तरीके से. अभी मैंने रूल्स नहीं बताए इसके आपको, इसीलिए आपके आंसर्स में काफी सारी गलतियां हैं. मैं अभी आपको बाद में करेक्ट करवाता हूं, लेकिन उससे पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी दे दें. व्हाई डिड द राइटर रेडीली एग्री टू देयर प्लान. पेस्ट कीजिए जल्दी से. व्हाई डिड द राइटर readily agree to their plan. The writer agreed in the plan because he thought the prank was funny and he was in love with the both of them due to their beauty and charm. Exact answer. Well done, Muhammad Amir. That's very fine. Well, आगे आइए. और कौन पेस्ट करना चाहता है इस आंसर को. अमीर आपका आंसर ठीक है. Writer readily agreed to ladies' plan because he was the admirer of the beauty and convinced by the blossoms. थोड़ा सा एक्सटेंड होगा नमान इकबाल. आंसर मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन एक्सटेंड मजीद वजाहत की जरूरत है. सोबिया, the writer had expressed his affection to the ladies and was hoping that they would not fool him, not fooled. नहीं, ये एक हिस्सा ठीक है इसका सोबिया, एक और ऐड होगा. मानूर जी. Writer readily agreed in the plan because they fall in love with them. No. The writer readily agreed to the plan because it was pleasurable
for him as well. Okay, it is one of the answer. एक चीज और tag करनी है शजिया. Naya Wazir. The writer readily agreed to the plan because he was in love with both of them and had opportunities to express it when they were apart. Okay, ये एक reason है नायाब, एक और देनी है आपने. He expected some favor from them and wanted to see what the trick was all about. No. Alisha, Emisha, nahi. The writer readily agreed because of two reasons. Yes, this is the answer. Because of two reasons. He was so captivated by their presence that he didn't realize he was the object of the plan and fell for the plausible story as part of their plan. Beautiful answer, Mustafa Imran. ये खूबसूरत आंसर है. सारे देखिए इस आंसर को. ये आंसर होना चाहिए. The writer readily agreed because the ladies were enjoying their time and the prank seemed to be fun. Partly correct, but not totally. Ikra Zainab Qasim. The writer agreed to the ladies because he loved them and always looked for opportunities to bleed his passion to them. One reason. Second is missing Qasim Usman. Nurul Huda. The writer readily agreed to the plan because they told him a plausible story that he laughed off. One of the reasons. Qasim आपने वो नहीं दी, Nurul Huda ने आप वाली नहीं दी. ठीक है, दोनों मिलके आंसर बनेगा. तलहा. The friendly behavior of the ladies made the writer fall for them. He was tricked into thinking that a prank was for another gentleman. Yes, one out of the two solid reasons, Talha. Excuse me. Yeah, the writer fell in the ocean of beauty with these young ladies. He lost his senses in front of them, the writer enjoying the coquetry of ladies. नहीं, आखिरी लाइन की जरूरत नहीं है अफसा, इसमें भी पार्टली करेक्ट है, एडिशन चाहिए. Zahida. The writer agreed as he was in love with the beauties and he thought that plan is funny and he got a good chance to enjoy their company. Okay Zahida. Beauties नहीं होता, beauty का plural नहीं होता, beauty ही होता है Zahida. Ji Hassan. The writer readily agreed to the plan because he was flirting with both and he wanted to give them every favor in order to gain their direction. Yes. TK Hassan. Sabah, the writer was quite impressed by the young lady's kindness. Moreover, he himself had positive gestures through the coquetness. One of the two reasons. एक और ऐड करेंगे Sabah Khan. Daniel, the writer readily agreed to the two ladies' plan as he liked being closer to them and did not mind out of love for them. एक reason. अब देखिए ऊपर सबसे अच्छा आंसर आया, मैं भी लिख रहा हूं ये सेकंड आंसर. The writer readily got agreed to their plan because first of all he was in love with the both and wanted to be in their company, and secondly, the story was told so convincingly that he could not smell that the tables going to be turned upon him. मैं पढ़ भी देता हूं, देखिए. Only 10% words. G. Ashraf Shah, sir, is better to rephrase words of Precis like plausible. Yes, why not? 10% leverage is there. You can use some words. The writer readily agreed to the plan of the women discussed because they had given him a convincing tale and that he was himself agreeable to avail opportunities. जी आगा साहब पहला हिस्सा आपका ठीक है, दूसरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें. ये देखिए मैं पढ़ने लगा हूं. The writer readily got agreed to their plan because first of all he was in love with the both and wanted to be in their company. ठीक है? And secondly,
The story was told so convincingly that he could not smell that the tables were going to be turned against him. ठीक है, turned upon him. उसे महसूस ही नहीं हो सका, स्टोरी इतने प्लॉजिबल और ट्रिकी अंदाज से बताई गई, वो बेचारा यही समझता रहा कि देयर वाज समबडी एल्स इन द सेम प्रेमिसेस, ठीक है, whom the ladies wanted to play the trick upon. लेकिन he was slack to see in their infatuation that he himself was going to be the target of butt. Got the idea? तो ladies जो है, it was too late, ठीक है, he didn't smell what was cooking. Yes, yes, definitely in that way too. It is also an idiom, you may use it, there is no problem. So this is how we do give the formal answers. अब देखिए यहां हमने as per question लिखा है the torments were given by the young ladies. इसमें लिखा है the writer readily got agreed to their plan. It does mean you need to slice out a part of your question statement and you have to fit it to the part of your answer statement. अब मैं आपको लास्ट में बताने लगा हूं पहले कि हमने कैसे प्रेसी को इसको कॉम्प्रिहेंशन को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में मिस्टेक्स हैं और टेंस डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा है. बेटा पिक्चर सेंड करो और इसको फौरन साफ करो. फहद पिक्चर सेंड करो और इसको साफ करो. कोई बात नहीं, हमेशा 3 to 4 लाइंस इज योर थ्रेशोल्ड लेवल. ये कम से कम लेवल है आपका, और जहां कहीं हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े हम कर सकते हैं, ठीक है. ये 4 लाइनों में ही है क्योंकि बोर्ड का फ्रेम छोटा है आपके लिए, तो ये 4 ही लाइनें हैं, पेपर पे भी इतनी आएंगी. साफ कर दें, बाद में इसको सेंड कर दूं, पहले इसे साफ कर दूं. अब मैं आपको बताने लगा हूं जी. But he was also enjoying their company, so we don't have to mention that. No, we have to. इसीलिए तो उनके प्लान के साथ एग्री किया है उसने, ठीक है. लोग होते हैं ना जो वुमेन की कंपनी को किसी भी सेंस में एंजॉय करना चाहते हैं. वो पंजाबी में हमारे एक मुहावरा चलता है, कहते हैं औरत मंगे पेड़े ते देन वाले बथेरे, मर्द मंगे आटा ते उन्होंने आटे दा भी काटा. क्या मतलब है कि कोई औरत किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, मेरे जैसे 15 आ जाते हैं, टायर पंक्चर हो गया, नहीं प्लीज आप साइड पे हो जाएं, आपके कपड़े गंदे हो जाए, मैं चेंज करता हूं. तो एवरीबॉडी इज जस्ट गोइंग टू हेल्प आउट दैट लेडी देयर. और अगर कोई मर्द बेचारे का गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए हाईवे पे, वो हाथ ही देता रह जाता है. मचाले को गड्डी वाला रोके, 200 गाड़ियां गुजर जाती है, फिर कोई बेचारा रहम खा के रोकता है, अदरवाइज नहीं. So definitely in order to enjoy the company, it is emphatic to mention this thing. Got the idea? अब आ रहे हैं जी how to attempt comprehension in exam. अच्छा, इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है. इसमें सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. कैसे मैं बताता हूं. फर्स्ट रीडिंग, अब आपने सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग लेनी है. फर्स्ट रीडिंग में आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है. चंद एक टास्क परफॉर्म करने हैं. वो क्या है? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. कॉम्प्रिहेंशन में बीइंग टीचर हम अपनी स्ट्रेटजीज को बदल बदल के देखते रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है. इसमें आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें तो आप पहली ही रीडिंग में 3-4 आंसर्स को कवर कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन गेट एट द gist, know the central idea of the text. Then number 3, get at the tone and style, you may call it attitude of the writer. Got the idea? Underline the important points. अब आपने पहली रीडिंग में जितने मैक्सिमम पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, आपने उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है. देन अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स.
माइंड यू ये वो वर्ड्स हैं जो आपके ओवरऑल पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हमने अभी प्रैक्टिस की इस पैराग्राफ में 4-5 वर्ड्स जो आप कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर सके, we figured them out and we discussed them how to infer the meaning of those words from the context. I'm talking about these words, ठीक है। एक तो वो 4-5 वर्ड्स होंगे जो ऑलरेडी आपके लिए अंडरलाइंड होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ। I'm talking about some sort of the difficult words deliberately been used in the text simply to dissuade you. And the examiner intends to see how do you infer the meaning of those words. ये आपने करने हैं, ये 5 काम आपने पहली रीडिंग में करने हैं, उसके बाद आपने लेनी है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग इसमें आपने क्या करना है, वंस अगेन रीड द क्वेश्चंस अगेन, okay, then consolidate the gist and the tone, इकट्ठा कर दिया, the tone of writer। इसको पक्का कर लें कि क्या सेकंड रीडिंग में भी वही जिस्ट सामने आ रहा है जो आपने फर्स्ट रीडिंग में लिया, because most of the times you come across very difficult text passages and definitely you get confused while going through them. Either they are not going to have continuity or integration in themselves, so sometimes you have to give more than 2 readings. But even if you have to be confined on to couple of readings, तो दूसरी रीडिंग कभी कभी आपके मेंटल होराइजन्स को और डेवलप करती है। आपको लगता है कि जो पहला जिस्ट मैंने सोचा शायद वो गलत था, मेरे ख्याल में इसका जिस्ट ये होना चाहिए, तो आपने उसको पक्का कर लेना है, राइटर की टोन को भी देख लेना है, उसके बाद अंडरलाइन द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी के जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको अंडरलाइन करें। देन बल्कि इसको पॉइंट्स नहीं, सॉरी, आंसर्स कर लें, पॉइंट्स की बजाय ना इंपॉर्टेंट आंसर्स। इसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बजाय आंसर्स ही कर लें, ठीक है, इनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद इन्फर द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। आपने डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग को इन्फर करना है। अब इस स्टेज पर आप दोनों मीनिंग को इन्फर करें, एक तो वो जो पैसेज में आपको हर्डल क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यू नीड टू इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और एक वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो उसने डिलिबरेटली आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पूछे हैं जो ऑलरेडी अंडरलाइंड है। अब इन सब के मीनिंग को इन्फर कर ले। इसके बाद अब हमने करनी है ड्राफ्टिंग। बेटा इसकी पिक्चर सेंड करना, फहद पिक्चर सेंड करना और बोर्ड साफ करना। अब हम आ रहे हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। हाउ टू ड्राफ्ट, दैट इज एन इजी टास्क इन कॉम्प्रिहेंशन। मैं बताता हूं आपको। वो पिक्चर पहले साफ कर दो फिर इनको सेंड कर दो। अब इस ड्राफ्टिंग वाले सेक्शन में आपको बेहतर पता चलेगा कि आपने कैसे अपने आंसर्स डिवाइस करने हैं, ठीक है। सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ड्राफ्टिंग। Once again, you'll have to make a rough draft. As I told you earlier, while discussing Precis, you may go to the last page of your answer sheet and just do give the heading rough work. And after that, start manipulating your answers there. Okay, you can use as many pages as you like for your rough work. You are at complete liberty. तो आप rough work कीजिए। अब आपने क्या क्या करना है अपने आंसर्स को डिवाइस करते वक्त। नंबर 1, concentrate
on the exact content. अपने एग्जैक्ट कंटेंट को देखिए कि उस आंसर में क्या कंटेंट आपने देना है. Don't elaborate your answer for nothing. Don't stretch it out, elastified for nothing. उसमें क्या होता है, कभी कभी अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप दे जाते हैं. Confine yourself to the composed content, what you are required to give only. Got the idea? Then number 2, concentrate on the language and the grammar. लैंग्वेज और ग्रामर पे कंसंट्रेट कीजिए कि क्या लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है और क्या ग्रामर आपकी करेक्ट है. मैं इसमें एक और टैग कर रहा हूं आपके लिए कि कंसंट्रेट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन. अब आपने टेंस और अपने प्रोनाउन के ऊपर कंसंट्रेट करना है. If there is a disagreement of tense, out of 4 marks, you are not going to get even a single mark. Straight away it is 0 for you if there is a disagreement of tense. What do I mean when I say disagreement of tense? It just means that whatever is the tense of your question statement, that should be the tense of your answer statement. अभी आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं आपके आंसर पढ़े हैं. क्वेश्चन कईयों ने इसको प्रेजेंट टेंस में दिया है, कईयों ने इसको फ्यूचर टेंस में दिया है, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है जी. जैसे मैंने आपको पिछले 2 फैब्रिकेट करके दिए हैं आंसर, उनके अंदर मौजूद है कि हमारा टेंस तल्हा पास्ट टेंस था, हमने पास्ट में ही उसको आंसर किया. क्लियर हो गया? आगे हमने मजीद करनी है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, वहां मैं आपको क्लियर करता हूं. मकसद कहने का यह है कि अगर आपसे पास्ट टेंस में पूछा जाता है तल्हा, तो आप प्रेजेंट यूज नहीं कर सकते. अगर आपसे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पास्ट यूज नहीं कर सकते, आपको प्रेजेंट में ही आंसर देना है. I repeat it once more emphatically that whatever is the tense of your question statement, that ought to be the tense of your answer statement. Got the idea? Same is the case with pronouns. If you start your answer with a plural pronoun, आगे plural ही आएंगे. If you start your answer and mention the singular pronoun, आगे singular ही आएंगे. It is important. Then concentrate on integration and coherence. शायद कॉम्प्रिहेंशन में इंटीग्रेशन इतनी मैटर नहीं करती है. इंटीग्रेशन को मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट कंटेंट्स का देना ही इंटीग्रेशन है. कोहेरेंस मैटर करती है, द रिदम ऑफ योर आंसर, द सिंप्लिसिटी and clarity of thought. What happens most of the times, the students deliberately do make use of verbose language, difficult language, verbosity, wordiness. What is the bad impact of this wordiness? Your language becomes dominant and your thought is suppressed. Actually, it is your thought that ought to be dominant and your language must be subsidiary. ठीक है, इसलिए ensure simplicity of language and ensure clarity of thought. For that purpose, कि हमें coherence मिल सके, मैं इसको अलग पॉइंट के तौर पे भी लिख देता हूं. ensure comprehensibility and clarity of answers. कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और क्लियर आंसर भी हो. ठीक है, देन चेक द लेंथ ऑफ द आंसर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपका मिनिमम आंसर जो है वो 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए. 3 से 4 लाइन का. एक्सटेंड आप इसे कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन.
लेकिन बिला वजह किसी चीज को एक्सटेंड नहीं करना। इंग्लिश में बहुत किस्म की गलतियों को चेक किया जाता है, इसलिए अवॉइड स्ट्रेचिंग आउट योर आंसर्स फॉर नथिंग। जी शजिया, पॉइंट नंबर 5 एक बार फिर समझा दें जी। पॉइंट नंबर 5 हमारा है चेक द लेंथ ऑफ द आंसर, कि आपने आंसर की लेंथ को चेक करना है, क्योंकि single liner answer is not acceptable, biliner is not acceptable. You need to stretch it out at least to 3 to 4 lines. It is your minimum benchmark, your threshold level. आप जरूरत के तहत शजिया इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना कम से कम आंसर आपका आएगा। Should answer also be consistent with the tense of passage or simply the question? No, simply the question. Simply the question, Ahmed Shah. That must be in agreement to the tense of your question, not the tense of the passage. Got the idea? Yes, sir. Will you give us some paras or tasks for practice? Definitely, my dear. Definitely, I'm going to give you. Okay? G. Also, number 4. Number 4, ensure comprehensibility. Comprehensive means understandable. That your answer must be understandable, Shajia. And how is it possible? When you avoid wordiness, you make use of simple language and clarity of thought. There must not be any kind of ambiguity or vagueness in your answer. आपके आंसर में vagueness नहीं होनी चाहिए, ambiguity नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Clarity of thought होनी चाहिए, जो आप कहना चाहते हैं वो पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? Can we exceed 3-4 lines? What is maximum acceptable limit? जी मुस्तफा, 3 to 4 लाइंस, मेरी बात गौर से सुनिए मुस्तफा इमरान, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप इसको एक्सीड कर सकते हैं एज पर द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 4th क्वेश्चन आता है जिसमें आपका वो कोई ओपिनियन पूछता है, क्रिटिकल एनालिसिस आपसे मांगता है, तो आप इसको 10 लाइनों पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्रीहेंशन में वो प्रेसिव वाली कंडीशन नहीं है कि आपने इसको 3rd पर्सन में ही करना है। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस में आप 1st, 2nd, 3rd सारे पर्संस यूज कर सकते हैं। गॉट द आइडिया? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्राफ्टिंग स्टाइल। रफ ड्राफ्ट के बाद अब आपने बनाना है अपना नीट ड्राफ्ट। कुछ लोग कभी कभी 2 रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। कुछ लोग क्या करते हैं, रफ पेज पे ही अपना नीट ड्राफ्ट भी बना लेते हैं, नीट आंसर डिवाइस कर लेते हैं। It is time consuming. Inshallah, by the time you are going to take your exam, अल्लाह की मेहरबानी से आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी। रफ वर्क करने के बाद डायरेक्टली आप मेन पेज पे आ जाइए और नीट ड्राफ्ट को हिट कीजिए, ठीक है? और रफ ड्राफ्ट को वर्टिकली क्रॉस कर। क्लियर हो गया? दिस इज द वे you go for your comprehension questions. Sir, is it okay to use contractions? Not at all, Sarah Suleiman. Contractions are informal. Since we are the followers of the British English, so Britishers don't make use of contractions, and so is the case with you. आपने contraction कभी इस्तेमाल नहीं करनी है। जो अंग्रेजों की इंग्लिश होती है, ये 2 किस्म की होती है। एक को कहते हैं आरपी, इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, या इसको हम क्वींस इंग्लिश भी कहते हैं, क्वींस इंग्लिश। गॉट द आइडिया? और एक होती है कखनी। कखनी जो आपका एजुकेटेड तबका है इंग्लिश, द पार्लियामेंटेरियंस, द पीपल फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, the members of the royal court, intelligentsia, the court of justice and what not, ये सब लोग जो हैं आरपी स्पीकर्स होते हैं। और आरपी स्पीकर कभी कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करता है। आप कभी प्रिंस चार्ल्स को नहीं सुनेंगे आई कैंट, आई वॉन्ट, आई हैवंट, इजंट, एंड, नॉट एट ऑल। वो पूरा बोलेंगे आई कैन नॉट, आई विल नॉट, आई हैव नॉट। In that way, contractions are used mainly by the Americans, और दूसरे नंबर पे ये कॉकनी स्पीकर आपके contraction यूज करते हैं। कॉकनी स्पीकर जो है, they are the men in the street, Tom, Dick and Harry's, common man, वो यूज करता है इंग्लैंड में contractions पे। आप ये पढ़ेंगे, contraction अखबार भी देती है, contraction novels में आपको मिलेगी, short stories में मिलेगी, ठीक है, वहां दी जा सकती है। बट CSS में आपके लिए contractions disallowed है,
आपने कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है. गॉट द आइडिया? यू हैव टू फॉलो द फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग. क्लियर? बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. वेल, नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट कटिंग? कटिंग आहिस्ता आहिस्ता आपने अवॉइड करनी है. रफ ड्राफ्ट में आपकी कटिंग आ जाए, नो प्रॉब्लम, उसको कट कर दें एंड पे आप वर्टिकल लाइन के साथ. नीट में कोशिश करेंगे कटिंग आपकी कम से कम आए. Sir, a draft is necessary. We cannot just jump directly to the answers. Why not, Mustafa Imran? If you're confident about your language, you can directly hit the neat draft. But in that case, I would advise you to please go through your answers once you compose them. जब आप बना लेते हैं अपने आंसर को, तो एक बार उसे फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि there are so many pen slips most of the times. In order to avoid those pen slips, you have to have another perusal of the answers, because by doing that you could be able to spotlight certain pen slips and you can go for self correction of them. Got the idea? Should we focus on British spelling as well? Yes, Amasha, we need to focus each and everything British. होता है ना, pronunciation भी वही आपने सीखना है. जैसे अमेरिकन schedule कहते हैं, हम कहते हैं schedule. ठीक है? British followers, जैसे British में कहते हैं the doctor gave me an injection with a syringe. American कहते हैं oh doctor gave me a shot with a hypo. Hypo कहते हैं syringe को, shot कहते हैं injection देना. अंग्रेज बड़ा माइंड करते हैं अगर कोई कहे कि Mr. Smith has expired, वो कहते हैं is it medicine that has got expired? Passed away, not expired. तो इसलिए हमें ब्रिटिश को ही फॉलो करना है. कुछ वर्ड्स एब्रीवेट किए जाते हैं, अगर वो आप एब्रीवेट करते हैं तो आपको डॉट देना होता है. जैसे एग्जामिनेशन को हम भी ऐसे एग्जाम यूज कर लेते हैं, डॉट देना है, गवर्नमेंट डॉट. ठीक है, डॉट देना है, फिर ये एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं. हमारे यहाँ आदत पड़ गई है लोगों को, अपने ही वर्ड्स कॉइन करना शुरू हो गए हैं, अपनी इंग्लिश देनी शुरू हो गई है. एक दिन लाइव क्लास थी यहाँ पे, कोरोना से पहले एक स्टूडेंट काफी लेट आया. मैंने कहा वेयर हैव यू बीन, आप लेट क्यों आए? कहने लगा सर आई वाज इन यूनी. मैंने कहा व्हाट इज दिस यूनी? कहते यूनिवर्सिटी. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह इस किस्म की अंग्रेजी शुरू कर दें. द अदर डे एक विजिटर यहाँ आए इन्हीं कोरोना के दिनों में, तो उनकी बेटी साथ थी. किसी रेफरेंस से मेरे पास आए, मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से, और आप कहने लगे कि सर बड़ी गड़बड़ेशन हो गई है. ये वर्ड उन्होंने बोला, गड़बड़ेशन, ये बड़ी गड़बड़ेशन हो गई. मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे गड़बड़ेशन हो गई. मैंने कहा क्या गड़बड़ेशन हो गई? यानी गड़बड़, उसको पंजाबी दे वर्ड ਨੂੰ गड़बड़ उन्होंने अपनी अंग्रेजी बनाती, गड़बड़ेशन हो गई है. इस बैच में बच्ची को एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो कहते पैक हो गया है, नेक्स्ट बैच में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं. तो हम तो कमाल लोग हैं, एनी वर्ड्स को तोड़ फोड़ देते हैं. तोड़ फोड़ ही देख ले सर, मेरे मुंह से निकल गया है. टॉर्पर, इंग्लिश का ये वर्ड है टॉर्पर, ये TORPOR. टॉर्पर का मतलब होता है लिथार्जी, सुस्ती, और हमने इसको बिगाड़ दिया, तोड़ फोड़. यार जिस्म की बड़ी तोड़ फोड़ हो रही है. ठीक है, इसी तरह जैसे फैटीग, कि आज मैंने कोई काम ना कमी, मैंने बड़ी फटीक पई. ठीक है, फटीक, फटीक. तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्टॉर्ट करते हैं. अल्लाह हमारा हाफिज और नासिर हो, अंग्रेजों को पता चल जाए तो उनकी रूहें कब्रों से निकल आए. एनीहाउ, करो जी इसकी पिक्चर सेंड. अब हम आ रहे हैं अपने एक नए कंटेंट पे, और उसके साथ में आपको जी फैटीग इज यूज्ड इन ट्रेनिंग एज वेल एज अ पनिशमेंट. यू आर वेरी राइट, आर्मी में भी यूज होती है, PMA ट्रेनिंग में भी यूज होती है. रमान इकबाल, साफ करें जी इसको. और उसके साथ अब आपने क्या करना है, ये एक प्रेसी इन्हें सेंड करनी, अभी अभी ये सेंड करो. नीचे वैसे बोल्ड में लिखी हुई है, उधर से सेंड करवा दो बेहतर है, वरना ये इधर से ही कर दो. सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द, हाँ ये वाली, व्हाट इज मेंट बाय द टोन ऑफ द राइटर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. Usama bin Babar, were you present yesterday? Yes or no? Were you present yesterday, Usama? Usama bin Babar. So I explained it in detail yesterday. Tone का मतलब ये होता है attitude या style, कि ये थोड़ा सा एक different element है.
कि आपने राइटर का स्टाइल और उसका एटीट्यूड गेस करना है राइटिंग से, कि क्या वो सरकास्टिक है, वो तंज तो नहीं कर रहा है इसमें, क्या वो रेडिक्यूल तो नहीं कर रहा, वो क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, वो लैशिंग तो नहीं कर रहा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं है। तो इस टोन को, स्टाइल को अंडरस्टैंड करना है। जिस टोन में आंसर है उसी टोन में आपने, जिस टोन में क्वेश्चन है उसी टोन में आंसर देना है। होता है ना कभी कभी क्वेश्चन हमें प्लेन लगता है लेकिन वो प्लेन होता नहीं है, ठीक है, उसमें कोई पनिंग होती है, कोई विट होती है, पनिंग ऑफ द वर्ड्स होती है। जैसे वो एक एक्चुअल वाक्य भी है, जल्दी सेंड करना यार इनको। एक्चुअल वाक्य भी है, जब विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के पीएम बने थे तो उनका एक अपोनेंट जो था वो रिच आदमी था, चर्चिल गरीब आदमी था। तो एल्बर्ट हॉल में इनका एक मुनाजरा था, तो दोनों का एक टाइम फिक्स हुआ। वो आदमी, उसके पास अपनी कार थी उस वक्त भी, वो गाड़ी पे चला गया, चर्चिल को टैक्सी लेके जाना पड़ा। वो हॉल के बाकी तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, एक ही दरवाजा खोला गया, बोथ फॉर एक्सिट एंड एंट्री। और उसके आगे एक पैरापेट्स लगी हुई थी, जैसे वो क्यू मेक करने के लिए लगी होती है ना, बार्स लगी होती हैं बारीक सी, वो थी। अपॉइंटेड टाइम से 7 मिनट ऊपर हो गए तो चर्चिल का अपोनेंट, जो भारी भरकम सेहतमंद आदमी था, गुस्से में बाहर निकल आया। उसने इसको एज ए पॉलिटिकल कार्ड यूज किया, कहने लगा मैं किसी ऐसे आदमी के साथ मुनाजरा ही नहीं करूंगा जिसे टाइम की पाबंदी का ख्याल नहीं है। और गुस्से में निकल के जैसे ही पैरापेट में एंटर हुआ, इधर से चर्चिल एंटर हो गया। तो उस मोटे आदमी ने, उसके अपोनेंट ने उसे कहा कि मैं गधों को रास्ता नहीं देता होता, इंग्लिश में उसने कहा। चर्चिल फौरन पीछे हट गया, कहने लगा मैं दे देता हूं तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द विट, द पनिंग ऑफ द वर्ड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड इन व्हाट अ काइंड ऑफ टोन वन इज जस्ट गोइंग टू स्पीक आउट। ओसामा, जैसे होता है कई दफा आपकी महफिल में, दोस्तों की महफिल में या दूसरी चीजों में भी, आपको आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि मेरा तवा लगाया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टोन्स होती है। सो व्हेन वी रीड आर्टिकल ऑन डेली बेसिस, there's a bulk of words we don't understand. So how to overcome that hurdle? Afsa, I told you that there you need to apply the technique of inference. Okay? Inference का verb होता है to infer, जिसका मतलब उर्दू में होता है अखज़ करना. You try to deduce the meaning of a difficult word from the context. तो कॉन्टेक्स्ट से जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वो जो बल्क ऑफ वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल में आपको 10 वर्ड्स डिफिकल्ट नजर आए हैं, आप कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करें प्लॉजिबली कि इसका क्या मतलब है, आप इस टेक्निक से 6 से 7 वर्ड्स के मीनिंग समझ जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी 3 जो रह गए, देखिए कि वो अगर सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो फील फ्री टू से गुड बाय टू दैम, नो नीड टू लुक एट दैम। गॉट द आइडिया? दिस इज द वे how we do go to infer the meaning of difficult words. और अगर आपने याद करने हैं डेली आर्टिकल्स में से, तो 4 से ज्यादा वर्ड नहीं याद करने, इससे ज्यादा याद नहीं रहते, जेन में नहीं आते, इतने करने। Amasha, should we do only take home assignments for now, or should we start practicing Precis and comprehension from book? Not yet, Amasha. अभी आपने टेक होम एक्सरसाइजेस को करना है, ठीक है। अभी आप तक एक प्रेसी आई आ रही है, भेज दी गई है जी, चली गई स्टूडेंट्स को। एक्नॉलेज कीजिए, आपको अभी अभी एक प्रेसी पैसेज भेजा गया है, प्रेसी है ईयर 2000 की। हैव यू रिसीव्ड? इट इज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक हो गया। So comprehension we did just is the attitude of writer is descriptive. Yes, definitely. You are very right, Manur Sajid. अब देखिए जी हमारा नेक्स्ट टास्क, मैं आपको 3 से 4 मिनट ग्रांट कर रहा हूं, आपने इस टेक्स्ट पैसेज को पढ़ना है, मीनिंगफुली पढ़ना है इस प्रेसी को, और उसके बाद मैंने आपसे इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। गॉट द आइडिया? इसको आपने पढ़ना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। टेक 4 मिनट्स, गो थ्रू दिस टेक्स्ट। हरी अप। ऑफलाइन कर दीजिए, वो म्यूट कर दे।
Yes. Have you people gone through the text? पढ़ लिया आपने? So you have gone through. First of all, you need to tell me about the level of complexity of this text. Is it a difficult text passage or an average or an easy one? ये easy passage है, difficult है, it is mediocre. Average, 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 average. Easy to medium average. So mainly your consensus tells me that it is either easy or to the maximum it is average. Nobody has, I mean, expressed that it is a difficult text passage. Well, Hassan, it is good for beginners as well. हालांकि ये past papers में आया हुआ है. ये मैंने आपको paper 2000 है जिससे लिया है CSS का paper. I hope all of you do have the access to the past papers. Am I right? Online net पे भी available है, and you must get equipped with unsolved question papers. आपके पास unsolved question papers होने चाहिए. अब आप मुझे इसका gist बताइए. Number 2, gist of this text. What the whole of the text is all about. एक एक करके आप paste करेंगे इसमें कि इसका gist क्या है. एक तो ऊपर कर दिया गया कि evolution of the 19th century middle class. जी महक ने किया था, आ गया दोबारा. Evolution of the 19th century middle class, dilemma of middle class, life of middle class. जी struggle of recognition by middle class, the plight and resurgence of the 19th century middle class, respect and middle class. G evolution of the middle class through the ages, evolution of middle class in 19th century, middle class standards, social aspect, social status of classes, evolution of middle class, certain aspects of aristocratic life, life of middle class has evolved over time, how the middle class discovered its self-worth over time, rise of middle class in 19th century, struggle of middle class in 19th century, standards for middle class set by the society, evolution of middle class of 19th century, Osama bin Babar, Hassan Shah. Well, how to develop your own words, the evolution of the middle class, social status of people, evolution of society in respect to the middle class. Okay, मुझे ये खुशी है आप पार्लर से बाहर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स का जो जिस्ट है वो मॉडिफाई होगा. Race of middle class to aristocratic class, words, behavior with middle class, and evolution of middle class, advancement of middle class. Now, let me tell you two important things. Once more, if you have gone through this text passage with concentration, again, you might have noticed two things have been specified here. Okay? And what are those two things? Number one, middle class, and number two, 19th century. So, हमारा कोई भी जेनेरिक जस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है अगर इसमें ये दो चीजें मेंशन्ड नहीं है. तो 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्ट जस्ट दिया है, 3 से 4 नहीं ज्यादा है, सॉरी, जिन्होंने एग्जैक्ट जस्ट दिया है, एंड दैट इज यू कैन सिंपली राइट ईदर मिडिल क्लास ऑफ 19th century or evolution of middle class in 19th century, emergence of middle class in 19th century, struggle of middle class in 19th century, predicaments they faced in 19th century. So कोई भी ऐसा जस्ट जिसमें आप मिडिल क्लास और 19th century को डिस्कस करें प्रॉपर तरीके से, वो एक्सेप्टेबल होगा. फॉर एग्जांपल फर्क से कह रहे हैं रिस्पेक्ट्स एंड डिसरिस्पेक्ट्स ऑफ द 19th century. नो, एक तो आपने क्लास मेंशन नहीं की, दूसरा रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट. इट इज नॉट द होल जिस्ट. फर्क से ये कंप्लीट जिस्ट नहीं है, ये इसका एक पॉइंट है. ठीक है, जैसे मोहम्मद अवैस भी दे रहे हैं रेस ऑफ मिडिल क्लास टू अरिस्टोक्रेटिक क्लास, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जिस्ट नहीं है. गॉट द आइडिया? ये जिस्ट नहीं है, पॉइंट है. नाउ व्हाट द राइटर इंटेंड्स टू डिस्कस हियर बेसिकली, Besant is the name of the writer. ठीक है, he is just going to talk
अबाउट दिस पैसेज। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका क्यू देने लगा हूं, क्योंकि आज ये प्रेसी मैंने नहीं करनी, ये आपका होम टास्क होगा, आपने कल करके लानी है। वो बताना चाहता है कि in the early 19th century, middle class was supposed to be a class apart and was not allowed to get mixed up in other stratas of life except their birth of right or family connection. अब जब आप प्रेसी करेंगे तो आपका इसी किस्म का डायरेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, डायरेक्टली आपने हिट करना है, इसमें कोई आपने आर्मी, नेवी, बिजनेसमैन किसी चीज का जिक्र नहीं करना। उसके बाद वो कहता है एज दे ग्रू इन नंबर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्पेक्ट दे मेड देयर ओन क्लास एंड दे फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स रेंजिंग फ्रॉम सोब्राइटी टू हार्ड वर्क। देन चौथा पॉइंट वो कहता है कि दिस सेट एग्जांपल्स फॉर लोअर ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी टू बी फॉलोड, आई मीन पुअर क्लास ऑफ द पीपल। एंड देन इन द एंड, ठीक है, इन द एंड वो हमें बता रहा है कि they also set codes of good and bad behavior to protect the boundaries of this class. They set or established codes of good and bad behavior to establish the boundaries of this class. For example, आपके हाथ में पैसेज होना चाहिए, मैं फिफ्थ लास्ट लाइन से पढ़ रहा हूं। There were divergences of opinion as to what exactly was respectable and what was not. There were nevertheless certain conventions which were universally recognized. Wild and drunken behavior were certainly not respectable, nor were godlessness, avowed promiscuity, not an ill-ordered home life, unconventional manners, self-indulgence, or flamboyant clothes and personal adornments. For example, ये सारी examples हैं, इनको हमने omit कर देना, goodbye कह देना। हमें इन वर्ड्स के मतलब आते हो या ना आते हो, हमारी कॉमन सेंस बता देगी कि इसका मतलब क्या है, कि उन्होंने मॉरल और इमोरल, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनको बाइफरकेट किया। आई मीन दिस सेट कोड्स ऑफ बिहेवियर वेदर गुड और बैड। तो इनको जिक्र नहीं करना, ये बताना है कि उन्होंने अपनी फिर बाउंड्री जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोड्स ऑफ एटीट्यूड, कोड्स ऑफ बिहेवियर को सेट किया, गुड एंड बैड को। हर सोसाइटी का अपना एक पैरामीटर होता है, कोड ऑफ बिहेवियर होता है कि व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट। गॉट द आइडिया? सो उन्होंने भी यही किया, इसलिए एंड पे भी आपने ये एग्जांपल्स नहीं देनी, ये ओमिट हो जानी है। ये बात सही है, ये ठीक कह रहा है वसंत। 19th सेंचुरी में ही ये क्लास इवॉल्व होने के बाद इसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बिकॉज इट वाज राइट the aftermath of the French Revolution that started back in 1789, I think, and lasted at 1793, I feel. उसके बाद ये एक क्लास डिस्टिंक्शन डेवलप हुई। हमारे ये रिसेंटली फॉत हुए हैं, वो क्या नाम है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, नीलाम घर के कंपेयर, क्या नाम था उनका, नीलाम घर के कंपेयर, तारिक अजीज साहब, जी 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 जी, तारिक अजीज साहब की एक बड़ी खूबसूरत पंजाबी शायरी की किताब है, उसका नाम 35 साल उन्होंने पहले लिखी थी, उसका नाम है हमजाद द दुख। उसमें उनकी एक बड़ी खूबसूरत एक नज्म है जिसमें से एक शेर है कि मुड अजल तो इस दुनिया विच दो कबीले आए ने, एक जिन्हां ने जहर ने पीते, एक जिन्हां ने पियाए ने। यानी दो ही क्लासें हैं दुनिया में, एक जो एक्सप्लॉइट करती है और एक जो एक्सप्लॉइट होती है। फिलोसफर आज भी नहीं मानते कि दुनिया में कोई तीसरी जो है वो क्लास भी है। फिलोसफर कहते कोई क्लास नहीं, या वो पुअर क्लास है जो एक्सप्लॉइट होती है, या रिच क्लास है जो एक्सप्लॉइट करती है, और इन बिटवीन ये जो बेचारे मिडिल क्लास सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं, ये एक हैंगिंग पेंडुलम की तरह, दे ऑसिलेट इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। थोड़ा सा बेहतर हो जाता है उनका स्टैंडर्ड, तो दे डोंट वांट टू गो बैक टू द गटर, बैक टू द पुअर क्लास। ऊपर जाने की उनके मीन्स नहीं होते और वो डड्डू की तरह छलांगे लगाते रहते हैं। गॉट द आइडिया? अब जब आप इसकी प्रेसी को करेंगे तो आपको मिडिल क्लास को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्सटेंडेड टर्म है, ये एज इट इज यूज करेंगे। मिडिल क्लास, कोई जरूरत नहीं आप कहें कि जी बॉर्जियस क्लास ऑफ द पीपल एंड दिस एंड दैट, नॉट एट ऑल। ठीक है, टू नेशंस इन
words Pathan and Mutasrine Pathan. जी 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 जी, वेरी राइट, ऐसे भी हो सकता है, बट दिस इज ऑफेंसिव टू सम एक्सटेंट हसन। एनीहाउ, मतलब कहने का ये है कि ये आपकी प्रेसी जो है दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द मिडिल क्लास एंड इट्स एडवांसमेंट और व्हाट काइंड ऑफ प्रेडिकमेंट्स इट फेस्ड। लकी डी जो हमारा जिस्ट है, इसको आप इस प्रेसी में भी एज ए टाइटल भी ले सकते हैं। अब करना क्या है, आपने इंस्ट्रक्शन ये है कि आप ये प्रेसी करके आएंगे और इस तरह करनी है कि आपने नहीं, कंजर्वेटिव क्लास में नहीं यूज करना आपने, ठीक है। कंजर्वेटिव लोग जो हैं एलीट क्लास में भी होते हैं, पुअर क्लास में भी होते हैं, गॉट द आइडिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड टर्म्स को एज इट इज रजा खान कॉपी कर लिया करें, उसके सिनोनिम्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तरीकाकार ये होगा कि कल सबसे पहले मैंने आपकी प्रेसी पढ़नी है, आपने आके ग्रुप चैट में इसे पेस्ट करना है। ग्रुप चैट में पहली 4-5 प्रेसीज जो हैं और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज वो एक इंटरैक्टिव सेशन में होंगे, वो ग्रुप चैट में सामने आएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक दूसरे की प्रेसी को देख सकें और पढ़ सकें और सुन सकें। आपको पता चले कि आपने कौन सा पॉइंट मिस किया, कौन सा दिया, कौन सा कितने इफेक्टिव तरीके से प्रिसाइज किया, किस बंदे ने इस पॉइंट को बेहतर हैंडल किया, लैंग्वेज कैसी थी, क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन थी थ्रू आउट द टेक्स्ट। ऐसा तो नहीं कि कोई सेंटेंसेस इलेबोरेटिव फॉर्म में आए हैं, कोई ओवर प्रिसाइज्ड फॉर्म में आए हैं। सो एक बैलेंस वॉइस कीप करना भी जरूरी है। ये चीजें जब 2-3 प्रेसिस में आप देखेंगे तो आपको समझ लगेगी प्रेसी क्या है। गो कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगेगा शायद हमारा थोड़ा सा टाइम जाया हुआ है, तो विद ड्यू अपॉलॉजी वो जाया नहीं होगा, वो आप इंटरेक्टिव सेक्शन में बहुत कुछ लर्न करेंगे इन 3 से 4 प्रेसिस में, और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में साथ ही शामिल होगा। फिर इसकी प्रैक्टिस चेंज हो जाएगी, हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। गॉट द आइडिया। सो इट इज योर टास्क और बी मेंटली प्रिपेयर्ड। कल हमारा क्लास टास्क जो है थोड़ा सा बोरिंग है, 2 है। एक हमने स्टार्ट करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस जिसे हम बोलते हैं, वो कल ही कल में जल्दी जल्दी खत्म हो जाना है। साथ ही हमने एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम नरेशन कहते हैं, वो स्टार्ट करना है, ठीक है। I mean to say Sunday is off, my dear. Whenever we say kal, it means the next working day. The next working day. Don't be panic, Khatak साहब, अमीर साहब, Sunday या कल, सोमो, नींद पूरी करो, ठीक है। उठे बगैर मुंह धोए किसी ढाबे पे जाके चाय का कप पिए, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो। तो कल आपने प्रेसी आके इधर पोस्ट करनी है जब मैं कहूंगा, ठीक हो गया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जब मैं एक कंटेंट पढ़ा रहा होता हूं ना, उस दौरान जब आप क्वेश्चन करते हैं तो मेरी सारी तवज्जो चैट की तरफ चली जाती है। लेट मी फिनिश वन कंटेंट एंड राइट आफ्टर दैट आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक, ठीक है। Should we write 19th or 19th century? You can write in numeral as well. 19 जो है 19 वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन better to write in spellings 19th, ठीक है, वो बेहतर होगा। Sir, will we learn parts of speech or use of prepositions? Yes, use of prepositions is our content, Ashraf. Parts of speech is not our content, but I shall try to help you people. मैं कोशिश करूंगा कि part of speech के notes आपको send करवा दूं, ठीक है। 2-1 दिनों में वो आपको मिल जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपके साथ। हमने यहाँ वो चीजें करनी है जो कोर्स का हिस्सा है, क्योंकि ये बाकी रेडिमेंट्री नॉलेज आपने अपने तौर पे करना है, जिसके लिए आपको ढेर सारी बुक्स बताई गई, ठीक हो गया जी। पंक्चुएशन भी हमने करनी है, हमारी पूरी क्लास है इसके ऊपर। एहसन शाह पूरी क्लास है। God bless you all. Whatever we have done today, have you understood each and everything? I try to be very simple and comprehensive. Is it understandable for you people? May Allah bless you. Thank you very much, my dear. God bless you. And one thing more, जाते जाते एक बात कह दूं, you have every right to criticize my way of teaching, my method. आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आप मेरे बखे उधेड़ सकते हैं, लैशिंग कर सकते हैं, ऑन माई फेस मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आई अलाउ यू। कोई भी फॉल्ट अगर आपको नजर आता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अलहदगी में नहीं, सबके सामने डिस्कस करें। आई अलाउ यू, ठीक है।
because teaching is two ways. You learn from us, we learn from you. Got the idea? तो इंशाल्लाह कुछ भी आप जितनी मर्तबा भी पूछेंगे मैं आंसर करूंगा, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता. God bless you all. Thank you very much, my dear. Stay blessed. Thank you, dear. कर दें.